So the next question in this Python series is text trap. Okay, so this is the basically an module in Python, that is text trap. Okay, so here they are giving a long string and they are passing the maximum width, and we want to cut down the string into that maximum width. Okay, अभी 4 है तो 4 के पार्ट बना के हमें स्ट्रिंग रिटर्न करना है. Okay, so here if you see the मेन फंक्शन, तो इसमें उन्होंने स्ट्रिंग लिया है और मैक्सिमम विड्थ लिया है, एंड हियर दे आर पास कॉलिंग द रैप फंक्शन एंड दे आर प्रिंटिंग द रिजल्ट. ओके, तो हमें रिटर्न क्या करना है, एक लिस्ट रिटर्न करना है. तो देयर इज़ एन इम्पोर्ट फंक्शन इन टेक्स्ट ट्रैप. ओके, सो उन्होंने इम्पोर्ट करके दिया है. सो देयर इज़ फंक्शन इन टेक्स्ट ट्रैप दैट इज़ फिल फंक्शन. तो ये फिल मेथड करता क्या है, इट टेक्स एन आर्ग्यूमेंट लाइक स्ट्रिंग. तो पहले तो ये स्ट्रिंग लेगा जिसको हमें कट डाउन करना है, एंड द मैक्सिमम विड्थ दैट वी वांट टू कट डाउन इनटू दैट पार्ट्स मीन्स जो जिसको हमें पार्ट्स करना है. सो इट क्रिएट्स अ लिस्ट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स with this maximum width. Okay, so here we are returning that, and we will run the code. Okay, that's the thing, that's the function in text trap dot fill method. Okay, so that is the thing. Thank you.